जोमेटो का ऐड 80% off. This is how you can correlate. You are distracted automatically. बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्या बोलना चाहते हैं. किताब का नाम है वन डायमेंशनल मैन. Here he presents a very illuminating argument, and you would be able to relate with what he's saying. He said that the capitalism manipulates human desires. So his basic premise is this, that capitalism manipulates human desires through the use of mass media, and through this manipulation of human desire, it wants to create a consumer culture. A consumer culture that distracts people from their true discontent. True discontent. Now see, मतलब आपके रियल इश्यूज तो कुछ और है, रियल इश्यूज कुछ और है, बट क्योंकि मास मीडिया ने एक नैरेटिव बना रखा है, आपके रियल इश्यूज है रोटी कपड़ा मकान, मास मीडिया दिखा रहा है हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, और कुछ और भी दिखा सकता है, वो पतंजलि के एड्स दिखा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो दिखा सकता है. कैपिटलिस्ट जो चाहेगा वो दिखाएगा आपको. तो उससे क्या होगा? You will be distracted from the true discontent. You have issues with the government's functioning. You have issues with the corruption in the system. But what mass media is showing, वहां पे तो ये सब चीजें हैं ही नहीं, गायब है. मीडिया से ही जब चीजें गायब है, डिबेट ही गायब है. They are busy with glamorizing the politicians who are in power. They can be from either party. कोई सी पार्टी से हो सकते हैं. Because the capitalist, the politician is backed by the capitalist. He has come to the power because of backing by that capitalist who wants the politician to work for him as his agent. So what mass media does is tries to create a consumer culture, creates trivial desires, he says. लोगों के अंदर ट्रिवियल डिजायर्स, capitalism according to Marcuse uses consumer goods to satisfy trivial desires, making people oblivious to their own alienation. मतलब एक तरफ तो मेरा alienation हुआ है from the system, from myself and other things, but on the other hand the market is presenting so many things to me, distracting me from my own discontent with the system or with the mode of production or the government functioning, the religious institutions. But what I am being shown is Zomato ka ad, 80% off. This is how you can correlate. You are distracted, automatically distracted. That's why we'll see कि पुराने जमाने में there were so many revolutions happening. At the time of Indira Gandhi, the youth came and there was a revolution. Nowadays बहुत बड़ी बड़ी चीजें रहती फिर भी यूथ नहीं आता है. कोई आते भी हैं तो हम देखते हैं कि विलेजेस से लोग आ रहे हैं जो जनरली दे आर लेस एक्सपोज्ड टू दिस कंज्यूमर कल्चर, बिकॉज द यूथ जो है उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया इन ट्रिवियल डिजायर्स. नॉट ओनली यूथ बट दे आर ट्राइंग टू डू दिस विद मोस्ट ऑफ द पीपल, that you must visit that place
आप बोल रहे हो कि मेरी जिंदगी में तो अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है, नहीं, यू मस्ट हैव सर्टेन गोल्स इन लाइफ, यू मस्ट विजिट थाईलैंड, सम कहीं और ईस्टर्न यूरोप घूम के आओ, because it wants to generate these trivial facts. So what it does, it reduces your existence to one dimensionality. In capitalist system, a person's existence is reduced to one dimensional existence, where he only becomes consumer of utilities. You become the consumer of utilities. Capitalists want to produce maximum things and he needs a market. तभी तो प्रोड्यूस कर पाएगा जब कोई ना कोई बायर होगा, तो वो आपके अंदर बाइंग, वो आपके अंदर वो ट्रिवियल नीड्स को जनरेट करता है ताकि आप उन चीजों को बाय करें ज्यादा से ज्यादा और कैपिटलिस्ट और ज्यादा अमीर हो पाए. So Marcuse argued that people in capitalist society need to be awakened to their condition of alienation. एक नए तरह का एलिनेशन हम देख रहे हैं, एलिनेशन तो है बट वी आर नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर एलिनेशन. जैसे ही हम कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कैपिटलिस्ट का कोई ना कोई तरकीब ऐसी आती है कि वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है ट्रिवियल चीजों के अंदर. सो वी आर नॉट अवेकन्ड टू द कंडीशन ऑफ आवर एलिनेशन. So we never desire true freedom. He proposed a vision of a liberated society where labor becomes an expression of creativity and not just utilities, consumer of utilities. क्रिएटिविटी नहीं होती है हमारे अंदर, सिर्फ यूटिलिटीज के कंज्यूमर बन जाते हैं हम. It becomes, and this is what we call the one-dimensional existence. So this has to be reduced. And for reducing this, what we need is again the elimination of this capitalist system of production. So he also criticized the modern technological society. UPSC once asked a question: is the concept of liberty realizable in the modern techno-economic society? There we can use Herbert Marcuse very aptly. Marcuse says that the modern techno-economic society reduces a person to only consumer of utilities. His existence is made one dimensional. बल्कि इंसान जो है वो मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उसकी. Surely we consume the things, but we are not just the consumers. Our creative aspect has been subjugated. It has been sidelined. And this is due to the modern techno-economic society, which work as per the manipulative system of capitalism. Right? So we will use Mr. Herbert Marcuse there. This is what I want you to understand about Herbert Marcuse. If you have to read more, it is given in the notes.